Good afternoon, students. I hope you all are fine. Dear students, from class ninth, Social Science textbook, book 3rd, that is Political Science, we came to know about a chapter, and the name of the chapter is Democratic Rights. Democratic Rights. Before discussing its textual questions, I will give you a brief introduction of the whole lesson. Dear students, in this chapter, we have looked at two major elements of a democratic government. In chapter 3, we saw how a democratic government has to be periodically acted by the people in a free and fair manner. In chapter 4, we learned that a democracy must be based on institutions that follow certain rules and procedures. These elements are necessary but not sufficient for a democracy. Election and an institution needs to be combined with the third element, enjoyment of rights. To make a government democratic, even the most properly elected rulers working through the established institutional process must learn not to cross some limits. Citizens' democratic rights set those limits in a democracy. This is what we take up in this final chapter of the book. We begin by discussing some real life cases to imagine that what is mean to live without rights. This leads to a discussion on what we mean by rights and why do we need them. As in the previous chapters, the general discussion is followed by a focus on India. We discuss one by one the fundamental rights in the Indian Constitution. Then we turn to how these rights can be used by ordinary citizens who will protect and enforce them. Finally, we take a look at how the scope of rights has been expanding. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर में क्या देखा? जो चैप्टर 3rd था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, किस तरह मतलब लोग इसको इलेक्ट करते हैं, फ्री और फेयर मैनर, मतलब किस तरह इलेक्शंस होते हैं। तो चैप्टर 4 में हमने देखा कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशन दैट फॉलो सर्टन रूल्स, कि इस डेमोक्रेसी को फॉलो करने के लिए हमें सर्टन रूल्स और प्रोसीजर्स की ज़रूरत है। एंड दीज एलिमेंट्स आर नीड टू बी कम्बाइंड विद द थर्ड एलिमेंट, और इसके बाद एक थर्ड एलिमेंट ऐसा है जो एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स है। टू मेक ए गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक, even the most properly elected rulers working through the established institutions process must learn not to cross some limits. तो ऐसा है कि इनको सिटीजन जो शहरी हैं, ये जो इंजॉय कर रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स, इनको सर्टन लिमिट्स का कुछ लिमिट्स होती हैं जो इनको क्रॉस नहीं करनी होती, क्योंकि इनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। तो सिटीजन मस्ट राइट्स दैट सम लिमिट्स इन ए डेमोक्रेसी। तो सिटीजन जो होते हैं इनके लिए भी डेमोक्रेटिक राइट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई लिमिट्स होती है। मतलब ये अनलिमिटेड, इन ये ऐसा नहीं है कि कोई ये डेमोक्रेसी के अंदर फ्रीडम है तो हद से ज़्यादा इतनी फ्रीडम हद कर दें कि किसी का कत्ल कर दें, तो ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके अंदर कुछ लिमिट्स होती हैं। डेमोक्रेटिक राइट्स जो होते हैं, दिस आल्सो हैव सम लिमिट्स इन ए डेमोक्रेसी। तो दिस इज़ व्हाट वी टेक अप इन दिस फाइनल चैप्टर। इस फाइनल चैप्टर जो हमारा था चैप्टर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स, इसके अंदर हमने देखा कि व्हाट वी मीन बाय राइट्स, के राइट्स का क्या मतलब है, एंड व्हाई डू वी नीड्स राइट्स, और हमें राइट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एज इन दिस प्रीवियस चैप्टर द जनरल डिस्कशन इज फॉलोड बाय ए फोकस ऑन इंडिया। वी डिस्कस वन बाय, तो हमने ये पिछला जो चैप्टर था इस पे ज़्यादा फोकस था हिंदुस्तान पे, तो इसमें हमने डिस्कस किया वन बाई फंडामेंटल राइट्स को हमने एक एक करके डिस्कस किया, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए। तो उसके बाद हमने हाउ दीज राइट्स कैन बी यूज इन ऑर्डनरी सिटीजन्स, तो ये जो आम शहरी होते हैं इनको इन राइट्स का इस्तेमाल कैसे करना है। हु विल प्रोटेक्ट देम एनफोर्स देम, तो किसकी जिम्मेदारी है कि इनको बचाना है और इनको इन्फोर्स करना है। फाइनली वी टेक ए लुक एट हाउ द स्कोप ऑफ राइट्स हैज़ बीन एक्सपेंडिंग। तो लास्ट में हमने देखा कि इनकी स्कोप जो है किस तरह दिन ब दिन एक्सपेंड होती जा रही है। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो कल हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। थैंक्स।